Jai Hind, Dr. Manisha Patel from Divine Science Academy. Students, today we'll see about pollen grains. So, अगले लेक्चर में हमने देखा था कि जब एंथर दहिस होता है तो इट रिलीज पोलन ग्रेन्स, राइट? एंड वी नो दैट कि फ्रॉम वन पोलन मदर सेल 4 pollen are released, right? So actually pollen, they are of different shape. They may be spherical, oval shape, right? And even their surface may be of different. They may be either smooth or spiny, right? Datura's pollen grain are smooth and hibiscus, its pollen are spiny, right? And its diameter is normally 25 to 50 micrometer, right? So actually in 12th we are having one practical, the study of germination of pollen tube, right? तो ये थियरी याद रखना क्योंकि ये प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू भी इम्पोर्टेंट है. तो pollen grains actually it is having two layers. The outer layer is known as exine and the inner is known as intine. Exine and intine, outer layer, inner layer. That inner intine is made up of cellulose plus pectin. But most important, that outer layer, outer membrane is made up of sporopollenin. Sporopollenin, actually it is tough substance and withstand high temperature, acidic environment, basic environment. मतलब कि स्पोरोपोलिन का जो लेयर इतना टफ होता है कि एकदम हाई टेम्परेचर हो, एसिड एनवायरनमेंट हो, बेस, किसी से भी ये स्पोरोपोलिन डिग्रेड नहीं होता है. एंड इसी वजह से कि जो पोलन ग्रेन्स होती है उसके पास सराउंडिंग में, जिसके सराउंडिंग में स्पोरोपोलिन होता है, तो वो जल्दी से डिग्रेड नहीं होता है. और इसी वजह से आफ्टर सो मैनी ईयर्स इट इज़ ऑब्टेन एज अ फॉसिल. मतलब हमको ऐसी पोलन ग्रेन्स वापस मिलती है, वो डिग्रेड नहीं होती है. वाई? दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलिन, right? We got pollen grains after so many years, right? That two membrane, outer is sporopollenin, inner intine. There are some space where the deposition of sporopollenin is absent. That portion is known as a germ pore. Important point. What is germ pore? So understand that outer layer which is made up of sporopollenin or it having deposition of sporopollenin, but where the deposition is less or no deposition of sporopollenin, that portion or that part is known as a germ pore. Now what is the importance of germ pore? So remember that inner membrane which is made up of cellulose, that inner membrane on germination it forms pollen tube, and that developing pollen tube comes out from the germ pore. समझ में आया क्यों? बिकॉज इट्स ईजी, क्योंकि यहाँ से ये ट्यूब निकलना एकदम ईजी है. वाई? बिकॉज यहाँ पे स्पोरोपोलिन का डिपोजिशन नहीं है. एट विच लोकेशन? टॉवर्ड्स germ pore, right? Now this is nucleus, this is pollen grain. उसमें बाइपोलर स्पिंडल फॉर्मेशन होता है. एंड ड्यू टू फर्स्ट डिवीजन, दिस इज माइटोटिक डिवीजन, एंड इट फॉर्म्स टू सेल्स. न्यूक्लियस का डिवीजन होता है एंड इट फॉर्म्स टू सेल्स. दैट लार्जर वन इज नोन एज अ वेजिटेटिव सेल एंड द स्मॉलर इज जनरेटिव सेल. अब अकॉर्डिंग टू इट्स नेम यू कैन अंडरस्टैंड ना, जनरेटिव सेल्स. फाइनली इट टेक्स पार्ट इन फर्टिलाइजेशन, राइट? सो 60% जो एंजियोस्पर्म्स प्लांट्स है उसमें ये 2 सेल कंडीशन होती है, तब पोलन रिलीज हो जाती है, राइट? बाकी की जो प्लांट्स है उसमें 3 सेल कंडीशन में पोलन रिलीज होती है. तो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ 3 cells are formed?
So normally when pollen tube develops, so that vegetative cell remain as it is. But that generative cells divide and it forms two male gamete. Right? So now that generative cell divide and forms two male gamete. So now they are having three cell condition, that is one vegetative cell and two male gamete or two generative cell. Got it? Three cell condition, got it? One vegetative cell and two generative cell. So 60% angiosperm pollen release at two cell condition, and in remaining it release in three cell condition. So that another question may be asked, for the formation of male gametophyte, how much division takes place? So remember from starting, right? So here one meiosis, right now, from pollen mother cell, pollen form, right? So this is one meiosis, and here first mitotic division and second mitotic division. So that is how much mitotic division? Two mitotic division. So for formation of mature pollen or male gamete, right, male gametophyte, how much division takes place? One meiosis and two mitotic division. Remember, this is most important, right? याद रह जाएगा ना कि भाई पोलन मदर सेल में से मियोटिक डिवीजन होता है तो चार पोलन ग्रेन्स बनती है. मियोटिक डिवीजन यू कैन अंडरस्टैंड ना कि व्हेन वी टॉक अबाउट मियोटिक डिवीजन, तो इट occurs in two steps, and from one parent cell 4 daughter cells are produced, and all are having half number of chromosome. And when we talk about mitotic division, from one parent 2 daughter cells are produced and both are having same number of chromosome. This is mitotic division and this is meiotic division. Remember, meiotic division, it is entire one process but divided into two steps, meiotic 1, meiotic 2, and this is mitotic division, right? Remember this one. Okay, now pollen tubes, pollen grains, it cause respiratory disorder like asthma, bronchitis, allergy, पता है ना. और उसमें भी एक प्लांट है पार्थेनियम, दैट इज कैरेट ग्रास, जिसको हम कांग्रेस ग्रास बोलते हैं, राइट? तो दिस इज कैरेट ग्रास और कांग्रेस ग्रास, राइट, जिसकी वजह से एलर्जी होती है. और आपने देखा ही होगा ऑब्वियसली दिस कांग्रेस ग्रास, नॉट बीजेपी, ठीक है. तो दिस कांग्रेस ग्रास, दिस इज पार्थेनियम, कॉज एलर्जी. इवन नाउअडेज that pollen grains used as a food supplement. It is used by athletes and racehorse, उनकी एनर्जी लेवल इंक्रीज करने के लिए. नाउ ये जो अलग अलग पोलन ग्रेन्स है उसकी वायबिलिटी अलग अलग होती है. वायबिलिटी मतलब को कितने टाइम वो सर्वाइव होता है. इट्स वायबिलिटी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी. रिमेंबर सीरियल्स सच एज राइस, व्हीट, उसकी जो पोलन ग्रेन्स है इट लूज वायबिलिटी विद इन 30 मिनट. 30 मिनट्स में उसकी वायबिलिटी लॉस्ट हो जाती है. वाइल्ड रोजिएसी, लेग्यूमिनेसी एंड सोलेनेसी, इट्स वायबिलिटी लास्ट फॉर मंथ्स तक वो वायबल रहता है, राइट? तो ध्यान रखना, इन विच the pollen grains viability is 30 minutes and in which it is for months, right? And most important, we can store pollen for a long time, for a years, right, in liquid nitrogen. And when we use liquid nitrogen but natural, the temperature is -196 degree, right? And that store of pollen, then that is pollen bank, just a gene bank, blood bank, right? Same way
पोलन बैंक। ठीक है, ओके, इतना याद कर लेना। ओके, थैंक यू।